Dear students, welcome to today's lecture class. The topic of our today's lecture is composite section. Under this topic, we will learn what are the uh, principles of composite sections and how the stresses and strains are determined in the composite section under the influence of a force. So as you see in this picture, that is a cylindrical section, a cylindrical member having two different types of materials in its cross section throughout the length. The inner portion of the member is made up of steel and the surrounding portion of the member is made up of brass. The steel and brass both are rigidly connected, and when a load acts upon this member, then both the material takes the load. Some of the load is taken by the core, that is suppose the steel in this case, and the remaining part of the load is taken by the surrounding material, that is brass in this case. So the main principle of solving composite section problem is that we follow the strain developed in steel should be equal to the strain developed in brass under the influence of any load. So to better understand such problem, we take up a numerical problem about composite section. You can see the problem statement. A composite section consists of a steel rod of 140 mm diameter and outer brass tube of internal diameter 140 mm and external diameter 160 mm. Both are rigidly fixed over a steel rod having length 200 mm. So the length of both the materials, steel and brass, both are equal to 200 mm. The composite section carries a load of 550 kN on its top. Find the stresses produced in each material and also load carried by both the materials. We should take the Young's modulus velocity for steel 2 into 10 to the 5 Newton per millimeter square and Young's modulus of velocity for brass 1 into 10 to the 5 Newton per millimeter square. With this given data, we start solving the problem. First of all, we will calculate area of steel denoted by AS. This is equal to pi d square by 4, that is 3.14 into 140 square by 4, that is the diameter of the core, and this comes 15,386 millimeter square. The next area of brass, that is again pi d square by 4. The outer diameter is 160 millimeter and inner diameter is 140 millimeter. So we take 3.14 under bracket 160 square minus 140 square divided by 4, and this comes 4710 millimeter square. As per composite section properties, we equate the strains, that the strain in steel should be equal to a strain in brass. If sigma s is a stress in steel and sigma b is a stress in stress in brass, then sigma s upon E steel is equal to sigma b upon E brass. So sigma s is equal to E steel multiplied by sigma brass divided by E brass, and this way we find sigma s equal to sigma b into 2 into 10 to the 5, that is the E steel, divided by E brass, that is 1 into 10 to the 5, and this way we get sigma s is equal to twice of sigma b. So a relation is developed between the stress developed in steel and the stress developed in brass. Now load on steel plus load on brass should be equal to total load. So if we write the formula for load, that is sigma s stress in steel, sigma s multiplied by area of steel, that is A steel, plus sigma b and multiplied by A brass, area of brass equal to 550 into 10 to the power 3 Newton. And if we replace here sigma s by sigma b, then sigma s is equal to twice of sigma b. So twice sigma b multiplied by area of steel, that is 15,386, plus sigma b multiplied by area of brass, that is 4710, equal to the total load 55, 00 and 00. So sigma brass from this equation comes 15.500 Newton per millimeter square. And if we equate sigma s equal to twice of sigma b, then sigma steel, sigma s comes 2 into 15.50, that is 31 Newton per millimeter square.
Now load on steel is equal to sigma s multiplied by area of steel, that is 31 multiplied by 15, 386, so that is 476966 Newton. And load on brass comes sigma b multiplied by area of brass, so that is 15.5 multiplied by 4710, that is 73005 Newton. So this way we have solved this numerical problem. And if we repeat the exercise, what we have learned from this lesson, that किसी कंपोजिट सेक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के मटेरियल इस्तेमाल में आते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे स्टील एंड ब्रास मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। और जो कंपोजिट सेक्शन का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं उसके लिए हमें दोनों प्रकार के मटेरियल में स्ट्रेन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। जिस प्रकार से दिया हुआ न्यूमेरिकल है कि अगर कोई कंपोजिट सेक्शन है जिसका स्टील रॉड हैविंग ए 140 मिलीमीटर डायमीटर अंदर के हिस्से में और उसके बाहर के हिस्से में ब्रास का ट्यूब है, दैट इज उसका अंदर का डायमीटर है 140 मिलीमीटर और बाहर का डायमीटर है 160 मिलीमीटर। दोनों प्रकार के मटेरियल रिजिडली कनेक्टेड है और दोनों का लेंथ सेम है जो 200 मिलीमीटर है। तो कंपोजिट सेक्शन के ऊपर जो लोड एक्ट कर रहा है वो 550 किलो न्यूटन है। तो हमें निकालना है दोनों प्रकार के मटेरियल में स्ट्रेस क्या होगा और दोनों प्रकार के मटेरियल कितना लोड कैरी करेगा। इसके लिए हमें जो ई वैल्यू दिया हुआ है स्टील एंड ब्रास में वो आपको मालूम है। तो हमने पहले एरिया ऑफ स्टील निकाला पाई डी स्क्वायर बाय 4 से, वो आया 15386 मिलीमीटर। फिर हमने एरिया ऑफ ब्रास निकाला और कंपोजिट सेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है कि स्टील में जो स्ट्रेन होगा वो ब्रास में स्ट्रेन के बराबर होगा, इस हिसाब से हमने इक्वेशंस लिखे और इक्वेशंस में वैल्यूज़ पुटअप करके हमने स्ट्रेस की वैल्यूज़ निकाले स्टील में भी और ब्रास में भी। और फिर हमने इक्वेशंस का इस्तेमाल करके स्टील में कितना लोड कैरी हो रहा है वो निकाले और ब्रास में कितना लोड कैरी हो रहा है वो निकाले। और इस प्रकार से हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो जो चीज़ मांगा गया था उसको सॉल्व किया है। तो हमें आशा है कि आपको कंपोजिट सेक्शन के बारे में जानकारी मिली होगी और आप इस प्रकार से और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।